ठीक है। आर्टिकल 324 it provides for the powers and everything with respect to the election commission. ठीक है। It is a permanent independent constitutional body ठीक है। Since 1989 it is a 3-member body. Before it was a 1-member body. 1989 में 1988 में एक्ट आया था आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 which reduced the voting age from 21 to 18 years, जिसकी वजह से the load increased and the constitution of the election commission was also increased. ठीक है। Then we have who appoints it? Appointed by the president. ठीक है। The term of office of election commission is not defined in the constitution. It is not defined in the constitution. ठीक है। So what is the term otherwise? 6 years or 65 years, whichever is earlier. ठीक है। तो आपको पता है जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है। दे हैव इक्वल पावर्स। इलेक्शन CEC and the 2 ECs, they have equal powers. They have equal powers. Okay. Like the judge of a Supreme Court. Also, the election commissioners are eligible for reappointment. They are eligible for reappointment. काम क्या होता है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, टू कंडक्ट इलेक्शंस, ठीक है। प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, allot symbols to political parties, symbols and recognition to political parties. ठीक है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है बिफोर द इलेक्शन, उसको इम्पोज करना। प्रेसिडेंट को एडवाइज करना विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। एडवाइज प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs। ठीक है। तो ये सारे इनके पावर्स हैं। रिमूवल कैसे होता है इनका? बाय स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। एक रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस का पास बाय स्पेशल मेजोरिटी।
जैसे just like the judge of Supreme Court, जैसे हमने पढ़ा था. Then it acts as a court for settling disputes for number one, grant of recognition, to parties, and symbols, election symbols. ठीक है. Next we have UPSC, Union Public Service Commission. 9 to 11 members होते हैं. 9 to 11 members. Article 315 से 323 in part 14 of the Constitution. ठीक. So it is again an independent constitutional body. Independent है. Term of office इसका भी 6 साल और 65 साल, whichever is earlier. जो strength है ना, strength of the commission is determined by the president. It's determined by the president, not the constitution. ठीक है. Qualification to be a member is not defined. Qualification to become a member or chairman of the commission is not defined by the constitution. The expenses of the commission are charged on the consolidated fund. ठीक. They enjoy security of tenure. ठीक है. इनको रिमूव नहीं किया जा सकता. एक जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, they are not eligible for reappointment. मतलब एक ही बार अपॉइंट कर सकते हैं उनको, सेकंड टर्म का प्रोविजन नहीं है. UPSC is the central recruiting agency. ठीक. Presents an annual report on its performance to the president. ठीक. इन्होंने क्या लोन से लूंगा
उसको नहीं पता है. Kindly put your phone on mute. So UPSC has only an advisory role. Okay? Its decisions are not binding on the government. Next, you have State Public Service Commission. आर्टिकल्स इसके भी सेम है, 315 से 323. ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. But removed only by president. Constitution does not specify its strength. इसमें एज का क्या है, 62 years तक और 6 years whichever is earlier. ठीक है, वो छोड़ भी सकता है पहले रिजाइन करके. ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और कैपेसिटी के केस में इसको हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक, नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म, सेम. Not eligible for second term, same as the case of UPSC. Expenses इसके भी charged on consolidated fund of state. ठीक, so it is the watchdog of merit system in the state. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग प्रोविजन भी है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए कोई आर्टिकल स्पेसिफाई नहीं है. दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द concerned state legislatures. ठीक है, which request the parliament to create such a body. ठीक है, so it is a statutory body. UPSC और SPSC are constitutional bodies, while the Joint Public Service Commission is a statutory body. All right. So ये आपका हो गया UPSC and State PSC. Next we have Finance Commission. Article 280 of the Constitution provides for Finance Commission, which is a quasi-judicial body. Quasi-judicial body. It is also known as the balancing wheel of
फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, हर 5 साल के बाद। अपॉइंट कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट। 1 + 4 members means chairman plus 4 members, which are eligible for reappointment. Which are eligible for reappointment. काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? फर्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, between center and states. Principles that govern grants in it. ठीक है, जो ग्रांट्स इन एड दी जाती है स्टेट्स को, उसके प्रिंसिपल्स किस प्रिंसिपल्स के बेस पे होगा? दूसरा, augment measures needed to augment consolidated fund of state to supplement resources of panchayats. ठीक, और कोई भी any other matter referred to it by the president. Any other matter referred to it by the president. क्लियर है? जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन थी, that was headed by NK Singh. नेक्स्ट आपका आ गया नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, तो इसका आपका है, अगेन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 338 पार्ट 16, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सर्विस कंडीशंस आल्सो डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। सर्विस कंडीशंस डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इनिशियली क्या था ना, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज, जो बाद में चेंज हुआ 1987 में। 1987 में इसका नाम चेंज करके नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ 2003 में आपका 89th अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, जिसने इसको दो में बाइफरकेट कर दिया, नेशनल कमीशन ऑफ एससीज एंड नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज, एनसीएससीज एंड एनसीएसटीज। ठीक है, जो नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज था आपका, नेशनल कमीशन ऑन एसटीज जो बना 2003 में, Sir, the whiteboard is not visible. ओके जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव
नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज। ठीक है, ये 2003 में बना आपका, जब वो बाइफर्केशन हुआ, आर्टिकल 338 अल्फा। ठीक है, आपकी 1999 में एक क्रिएट हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा गया कि ट्राइबल्स के लिए एक अलग कमीशन की जरूरत है, तो ये क्रिएट किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एंड इट हैज 5 members, chairperson, vice chairperson plus 3। दैट इज द composition। ठीक है, ये सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जो एसटीज के, उनको प्रमोट करने के लिए इसका रोल था। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज। ठीक, तो इसका आपका जो आर्टिकल है 350 ब्रावो पार्ट 17। ठीक है, appointed by the president, appointed by the president, and this was introduced by the 7th Constitutional Amendment Act 1956। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेट करेगा सारे मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इलाहाबाद। Then we have 3 regional offices also. 3 regional offices. They are at Belgaum in Karnataka. Then you have Chennai and Kolkata. So it falls under Ministry of Minority Affairs. MOMA. Next, you have one of the most important offices, the Comptroller and the Auditor General of India. Auditor General, CAG. ठीक है, तो CAG Article 148, it provides for the office of the Comptroller and Auditor General. He is the head of Indian Audit and Accounts Department. He is the guardian of the public purse. ठीक है, and the entire financial system. Dr. Ambedkar said that it is the most important office of the Indian constitutional scheme. तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। टेन्योर कितना है? 6 साल या 65 years, whichever is earlier।
He can resign also, but he can be removed only by special majority. To ensure his security of tenure. ठीक है? He is not eligible for further office in Government of India. Determined by the Parliament. ठीक है? इसके सैलरी अलाउंसेस जो भी प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं, पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक? ठीक है? ये 3 तरह की रिपोर्ट सबमिट करता है. It submits 3 audit reports to the president. Audit report on appropriation accounts, audit report on finance accounts, and audit report on public undertakings. Cannot audit secret service expenditure. Secret service मतलब IB RNAW. इसके एक्सपेंडिचर कोई ऑडिट नहीं कर सकता. ठीक? क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स? नेक्स्ट आपकी जो बॉडी है वो है अटॉर्नी जनरल. Article 76 is the highest law officer in the country. Appointed by the president, and he must be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. Qualified to be a judge of Supreme Court. ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का जज के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके पास. Then term of office is not fixed. इसको किसी भी टाइम रिमूव किया जा सकता है. ओके? He holds office during the pleasure of president. मतलब प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं इसको. ठीक है? इसका काम क्या होता है? ये भी जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है ना किसी भी कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, दैट इज व्हाट इज डन बाय द अटॉर्नी जनरल. ठीक है? और ही कैन स्पीक
He has the right of audience in all courts. He has the right of audience in all courts in the territory of India. Okay? Can participate in the sittings of the House, both houses of parliament, and its committees. Okay? But does not have right to vote. वोट करने का राइट नहीं होता. ठीक है? He enjoys parliamentary privileges also. He enjoys parliamentary privileges. Similarly, इसको assist करने के लिए there is the office of Solicitor General. But जो Solicitor General का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. Not mentioned in the constitution. Not mentioned in the constitution. ठीक? Likewise, in state, you have the office of Advocate General. Advocate General of State. इसका आर्टिकल 165. ठीक है? He is the chief law officer of state. Again, he can participate and do all those things, but without right to vote. No procedure for removal. Term is also not fixed. ठीक है? So he's the chief law officer. He does not have the right to vote. No procedure for removal, and his tenure is also not fixed. ठीक? Appointed by whom? Appointed by governor only. Governor appoints the Advocate General of the state. So this we have completed the constitutional